एक फॉर्मूला तो भूल ही गया। x इक्वल्स टू एक्स मीन प्लस ऑफ a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट x इज इक्वल्स टू एक्स मीन। नोमेनक्लेचर नाम तो जानते ही होगे ना यार। ये है पोजीशन, एम्पलीट्यूड, फेज, मालूम है ना ये तो। अब ग्राफ देख लेते हैं कुछ। पहले काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ टाइम ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a माइनस ऑफ x, ये होना चाहिए। हाँ होना तो यही चाहिए यार। पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा स्क्वायर x, हाँ बस इसका ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर x, स्क्वायर x स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यू मीन। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर 1/2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू सम कांस्टेंट। ग्राफ देख लेते इसका। पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हाफ, यहाँ से हाँ चलो हाफ mv ए स्क्वायर प्लस सी, हाँ या स्क्वायर प्लस सी ओपनिंग पैराबोला, डाउन पैराबोला, पोटेंशियल एनर्जी का डाउन हाफ ऑफ पॉजिटिव है, पॉजिटिव ओपनिंग पैराबोला हाफ नेगेटिव होना चाहिए। हाँ समझ में आया, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। अब समझ में आया, ये होगा, अरे यार पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव माइनस ऑफ डाउन पैराबोला एंड पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी डाउनिंग पैराबोला एंड
ओपनिंग पैराबोला पोटेंशियल एनर्जी का, तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल, दोनों के इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया ना? ग्राफ तो समझ में आ गया होगा ना? समझ लो भैया, नहीं तो फिर दोबारा समझा देंगे और क्या।